Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is another video of the series that I've been uploading for class 12th and Vistas book chapter number 3rd, Journey to the End of the Earth. Writer हैं इसके Tishani Doshi. Tishani Doshi is a writer who has written this piece of information. Now what is this piece of information about? Now it says, before you read, if you want to know more about planets past, present and future, अगर planet का जो अर्थ का past, present और future हमको जानना है तो we should visit अंटार्कटिका. अंटार्कटिका एक place है जहाँ पे ठंडा रहता है, माउंटेन्स है, एकदम बर्फ से भरा हुआ, समंदर भी बर्फ फ्रीज हो रखा है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि वहां पे जाना बहुत जरूरी है. अच्छा, कैसे स्टोरी शुरू होती है? अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल. अब इसमें जो तिशानी दोशी ने बताया कि अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? रशियन बोट जो थी एक, जिसका नाम था एकेडमिक सोकोलस्की. एकेडमिक सोकोलस्की जो है एक बोट थी जिसके साथ में उन्होंने अपने आप को पाया. और कहाँ जा रहे थे वो? दे वर हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे हवा वाला, सबसे सूखा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा जो पहाड़, ऐसा जो एरिया था, ऐसा जो छोटा सा अर्थ जिसको बोलते हैं, छोटी सी जो जमीन थी, वहां पे वो जा रहे थे और जिसका नाम था अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जा, और कहाँ से इन्होंने ये अपनी शुरुआत की थी? जर्नी मद्रास से. ठीक है, मद्रास से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी. सो बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका, वो बता रही कि जब मैं अंटार्कटिका में पहुंचने वाली थी या पहुंची थी तो उससे पहले उनको क्या क्या मिला? दैट वाज लाइक हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग. कभी उन्होंने ट्रेन से, कभी उन्होंने शिप से, कभी उन्होंने बस से, ठीक है, ट्रैवलिंग की इन लोगों ने. इन्होंने कार से भी ट्रैवलिंग की. उसके बाद चेक पॉइंट्स आए, बहुत सारा पानी आया, समंदर आए, सब इन्होंने पार किया. नाउ फाइनली नाउ शी हैज रीच्ड देयर and now she is thinking about the Antarctica. Antarctica actually is a place where actually we get a sense that how the world was, how the world is, how will the world survive. So इस तरह की जो है हमको feelings और knowledge देता है. अब इसमें पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बता रहे हैं कि अंटार्कटिका जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स कैसे था, फिर अभी कैसा है और बाद में कैसे होगा. अब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री मतलब उनका बोलना है कि अंटार्कटिका जब पहले था, जब वहां पे ह्यूमंस नहीं थे. सो हाउ वाज इट? इट वाज टोटली आइसी, चारों तरफ आइस से भरा हुआ था, ठंडा था, नो वन कुड सर्वाइव, पशु पक्षी कुछ नहीं रहते थे उस टाइम पे. ठीक है, बहुत मुश्किल था वहां पे रहना. तो इसमें ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो ये बड़ा सा जो कॉन्टिनेंटल था, ये इसका नाम जो 500 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है, गोंडवाना था. ये गोंडवाना जो है नाम दिया गया है ये कॉन्टिनेंटल को. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन इम्पैक्ट ने कैसे इसको जो है खतरे में डाल दिया. हमारी जो लाइफ है, ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात करते हैं, वो कैसे खतरे में आ गई. ना ह्यूमन इम्पैक्ट क्या कैसे हो गया? ना सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशंस we have found that so many 12,000 साल पहले की बात, पहले से चल के जो आ रहा है 12,000 years, since 12,000 years. एंड इसमें बोल रहे कि जियोलॉजिकल जो लोग थे, जियोग्राफी स्टडी करने वाले, दे हैव एक्सप्लेन्ड कि ह्यूमंस नाउ डेज और पहले से जो है दे बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन गैसेज लाइक जैसे जो है फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोयला, सारा धुआं, पॉइजनस गैसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, विच इज डैमेजिंग द ओजोन परत जो होती है, हमारी जो ओजोन लेयर होती है, उसको डैमेज कर रही है. तो उससे क्या होता? व्हेन द ओजोन लेयर इज गेटिंग डैमेज, देन व्हाट हैपेंस इज जो अल्ट्रावायलेट रेज है सूरज की, वो किरणें डायरेक्ट हमारी जमीन पे पड़ेगी एंड देन दोज रेज अगेन हार्म आवर प्लैनेट. और इस तरह से जो है कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है? द एंड पॉइंट ऑफ द अंटार्कटिका, जो हम लोग एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ बोलते हैं, वहां पर जो है फर्क गिर रहा है. कैसा फर्क गिर रहा है? वहां पे द आइस इज मेल्टिंग, देयर आर वेरी so much of the damage, so much the sea level has risen a lot.
पानी का बहाव बढ़ गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है, आइस खत्म हो रही है. सो दिस वे वी आर पुटिंग आवर लाइफ इन डेंजर, द ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर, एंड इफ वी डोंट डू एनीथिंग देन सर्टनली वील बी इन ट्रबल. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. नाउ अब इसमें क्या है, एक मोड आता है, तो इसके लिए जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम करके दिया गया था. स्टूडेंट्स ऑन आइस बाय जॉफ ग्रीन. जॉफ ग्रीन ने जो है ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो चाहता था, he was tired of asking celebrities and big shot people or billionaires to visit Antarctic and for their entertainment. So finally the Geoff Green realized that यार अब ऐसे काम नहीं चलेगा, I should help the climate change, I should help जो नए हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको मैं इस चीज को दिखाना चाहता हूँ. सो ही मेड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड ही टुक द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू विजिट अंटार्कटिक. अंटार्कटिका में लेके गया वहां पे, और वहां पे स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था. वो क्या दिखाना चाहता था? व्हाट ही वांटेड एक्चुअली टू शो देम, ही वांटेड टू शो देम हाउ द वर्ल्ड वाज, हाउ द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड विल बी if we don't take care of the planet, if we don't do anything, we don't plant trees, we don't we don't stop using these fossil fuels and carbon dioxide, then our life is in danger. तो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उनको उसने दिखाना था, उनको दिखाया, जिससे उनको काफ़ी नॉलेज होगा और आगे वो अपने फ्यूचर में दे विल डू सम गुड टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं. तो ये सब हुआ वहाँ पे. उसके बाद क्या हुआ, वो लोग फिर वापस आ गए. सो दिस वाज बेसिकली एन amazing journey that helped students, that helped everyone how to survive and how to make sure that the planet is no more in danger, and what all steps can we take ahead. ठीक है, तो ये थी शॉर्ट समरी इसकी. नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, सो लेट्स गो अहेड एंड डू द क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन useful to us? Now obviously the world, according to this chapter summary and this chapter we study, the North Pole and the South Pole. So North Pole is where we start the journey of our earth की journey जहाँ से शुरू होती है, and then South Pole where we end, जहाँ पे हमारी life की journey जो है खत्म होती. Life in the sense the earth की journey. So because beyond that we don't see anything. It is like blue sky, it is like ocean. So that is the end point. So the world's geological history is trapped in Antarctica. Certainly it is, because that is the place where we realize how 500 million years the world was, where there were no one could survive, because it was so much icy, and जो environment था, environment was completely not supporting the any species to survive. ठीक है, और करंट में क्या हो रहा है, करंट जिस तरह से हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं, द वे वी बीन अफेक्टिंग द अंटार्कटिका, द आइस हैज बीन मेल्टिंग, एंड द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल्स की वजह से द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, एंड द फ्यूचर. So if we continue doing this, then certainly in future we'll have much trouble, and our species will be in danger. So that is what this story and says according to this question. Now the number 2 question we have, what are Geoff Green's reason for including high school students in the students on ice expedition? So why does the Geoff Green actually introduced this ice, the students on ice program? Because Geoff Green was earlier taking those celebrities, बड़े shots, big shots, लोगों को, millionaires को लेके जा रहा था उनके entertainment के लिए वैसी जगह पे, just to show them and entertain them. But finally Geoff Green realized that they are not they are not the future of the earth, they are not the future of ours, the global warming. So what he thought is, he introduced a program where he was a head of this program called Students on Ice, and he took a group of students to show them the future, past and present of the the environmental changes. Okay, तो इसके लिए इसने लेके गया स्टूडेंट्स को वहां पे, जॉफ ग्रीन ने. ही वाज फ्रॉम कनाडा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? अब इसमें बोल रहा कि
take care of small things. Now what happened, जब बच्चे वहाँ पे गए हैं, when the group of students and Geoff Green is there, so what they saw is the small एक घास होती है, तो वो जो छोटी सी घास है, the name of that grass is phytoplankton. Phytoplankton जो एक छोटी सी grass है, ठीक है, and the grass is destroyed by the ultraviolet rays, and because of that grass, what the story and the writer is trying to say is, if we don't take care of, we don't plant that kind of grass on the Antarctic, then what will happen is everything will get destroyed, because that grass was the main root of survival of those small species, birds and then small animals that lives on Antarctic. So this grass, so he's saying, if we plant more grasses, we take care of those grasses, certainly the big animals, the big mountains, everything will follow and they'll take care of themselves. Okay, the last question we have, why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present and past future? Now, so this place, actually, this is called, the best thing is, when we think about Antarctica, it is certainly a far of our imagination. We certainly think that this is probably the end point of the Earth. So that is what it is. It is the end point of Earth that gives us a knowledge that how the past was and how the present is and how it will be in future. So there are certain points that we can note down and implement on and make sure that our life and our species is not in danger. Global warming is in control. So there are so many steps taken by government to take care of these problems. Okay, so this was the questions and answers and summary of the chapter. I hope you liked it, and if you have any questions you want to put, you want me to do any more detailed question answers, certainly write me in the section below, and please do subscribe and share with your friends and colleagues. Thank you, and wait for more videos. Bye bye.